Dear friends, today we are going to discuss the Newland's octaves. So after the failure of Dobereiner-Strad, Newland start to classify the elements for the classification. So that is called as after the failure of Dobereiner-Strad, Newland start to classify the elements on the basis of atomic mass. तो उसने जो भी वहाँ पे टेबल फॉर्म किया था इट वॉज कॉल्ड एज ए न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑक्टेव्स लॉ. सो ऑक्टेव्स लॉ में स्टेट करेंगे दैट when elements were arranged in increasing order of their atomic masses, then the properties of every nth element are similar to the first. This is called as a octaves law. तो न्यूलैंड्स ने क्या किया? He arranged all known elements in increasing order of their atomic masses. तो उसे क्या मिला? Then he found that properties of every nth element are similar to the first. Let us see one example with its explanation. तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक octaves का table. So in this table, the first element is hydrogen. Actually, second element is helium, but it was not in this table because it is an inert gas and it was not discovered at that time. So we take next one: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and the next element is fluorine. Actually it's a eighth element. So he found its properties of fluorine are similar to the hydrogen. तो उसे कहाँ पे प्लेस किया? हाइड्रोजन के नीचे. फ्लोरीन के नेक्स्ट आएगा नियॉन, बट इट इज इनर्ट गैस, तो उसे फिर से यहाँ पे प्लेस नहीं दिया है. सो वी आर टेकिंग नेक्स्ट एलिमेंट: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, and again next one is a chlorine which is similar to the fluorine. तो उसे कहाँ पे प्लेस किया? फ्लोरीन के नीचे. The next one is potassium and last one is calcium. Actually at that time 56 elements were known, but this law is applicable only up to the calcium. So by using this table we can say that in this above table the properties of sodium are similar to the lithium and the properties of calcium are similar to the magnesium. So why it is called as octaves? Because he compared this classification with the octaves which are found in the music. जैसे आपको म्यूजिक का ऑक्टेव पता होगा, सा रे ग म प द नी सा, तो फर्स्ट लेटर भी सा है और एट लेटर भी सा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. Dear friends, again there are some limitation. So what are the limitation of octaves? तो ये क्वेश्चन आपको मे बी 3 मे बी 5 मार्क्स के लिए आएगा. सो लिमिटेशंस के लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देता हूँ. देयर आर 4 लिमिटेशन. द फर्स्ट वन इज अप टू कैल्शियम, सेकंड इज 2 एलिमेंट्स, थर्ड वन इज ऑल्सो 2 एलिमेंट्स एंड लास्ट वन इज नो स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट्स. तो ये आप कीवर्ड्स कैसे याद रखेंगे? अप टू कैल्शियम, to new elements, up to calcium, to new elements. Let us see the explanation. Up to calcium, out of 56 elements he could classify elements only up to calcium. तो इसका मतलब क्या? कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा. सो इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम. Second one, 2 elements. So to accommodate all known elements in this table, he placed 2 elements at the same place. एक ही जगह पे उसने 2 एलिमेंट प्लेस किए. For example, cobalt and nickel are placed at the same position. Again third one is 2 elements, but ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा चेंज होगा. He placed 2 elements having different properties under the same node. Again cobalt and nickel, actually these two have different chemical properties but they are placed in under the same node. And last one, no space for new element. तो 56 एलिमेंट्स के बाद जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे उनके लिए ये टेबल में कोई भी प्रोविजन नहीं था. सो देयर इज अ नो प्रोविजन फॉर न्यू डिस्कवर्ड elements and these are the limitation of Newland's octaves. तो इसकी वजह से क्या होगा? Because of all these limitation, Newland's octaves are also failed to classify the elements. And due to this all limitation, ये वाला जो classification था ये भी successful नहीं रहा. So this is all about the Newland's octaves. Thank you. Dear friends, if you like this video, please like, comment and subscribe my channel. Thank you.